Hello friends, welcome back to my channel. My name is Simran and you are watching SK Tech Learning. In this video, we will learn how to create, open and insert second file in your existing files. So let's start. Number one topic is creating a new document file. We will start here. In this activity, you create a document file and save it by assigning a name of your choice. If you want to create a new document, then following steps are: number 1. Start Microsoft Word by clicking on Microsoft Word command from the program group of start menu. If Microsoft Word has an icon on desktop, then double click on it. ठीक है, इसको ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਮੈਨੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ MS Word ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MS Word ਦਾ ਆਈਕਨ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਯੂ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਨਿਊ ਬਟਨ ਇਟ ਓਪਨ ਏ ਸਕਰੀਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਪਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਨਿਊ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ਉਹਦਾ नेम हमेशा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ document 1। Also, if you have already created a document file which is currently on Word screen and you want to create one more new one, then either you can click the new button from standard toolbar or select new command from the file menu, or you can also press Ctrl plus any key combination from the keyboard. A new document having name document 1 will be display। ठीक है, MS Word मान लो कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ document create ਕੀਤਾ है and you want to create one more, so you can use different way। Number 1, you can use your file menu for opening purpose। Okay, you can also use your keyboard by pressing Ctrl plus any key combination from your keyboard। Third method is standard toolbar। आप standard toolbar में जाके भी अपने document को open कर सकते हो। Clear? You can set the top, bottom, left and right margin according to your requirement by clicking the page setter command from the file menu। फाइल मेन्यू में जाके आप पेज सेटअप की कमांड पर जब क्लिक करते हो वहाँ से आप अपना मार्जिन भी सेट कर सकते हो। लाइक आपने टॉप और बॉटम में अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को सेट करना, देन यू कैन डू इट। व्हेन यू हैव सेट द मार्जिन देन क्लिक द ओके बटन इन द पेज सेटअप। जब आपने सारी सेटिंग कर ली देन आपने ओके पर क्लिक करना, आपकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग डिस्प्ले हो जाएगी। Second topic, we will learn open an existing document. If you have created a document and you want to open it, so to open an existing file or document, the following steps are। ठीक है, आप अब अगर किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। नंबर 1, you can open an existing document either by moving and clicking the mouse pointer to the open button from the standard toolbar, or by selecting an open command from the file menu, और बाय प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस ओ की कॉम्बिनेशन फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप फाइल मेन्यू से भी ओपन कर सकते हो, कंट्रोल प्लस ओ की कॉम्बिनेशन से भी प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप फाइल में जाके भी ओपन कर सकते हो एंड स्टैंडर्ड टूल बार से भी इसको आप ओपन कर सकते हो। जब आप ओपन पर क्लिक करोगे देन दिस डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स से आप अपने डाटा को ओपन कर सकते हो। आपने किसी भी लोकेशन पर सेव किया हो, जैसे कि आपने किसी ड्राइव में अपना डाटा सेव किया हो, देन आपने इसको क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पर नीचे डिस्प्ले हो रहा है फाइल नेम, यहाँ पर अपनी फाइल का नेम टाइप करके भी आप उसको ओपन कर सकते हो। जब आपने नेम टाइप कर लिया देन ओपन पर क्लिक करना होता है। दिस डायलॉग बॉक्स हेल्प यू टू select a document file that you want to open for working। जिस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करके काम करना चाहते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस डायलॉग बॉक्स यू कैन ओपन इट। यू कैन टाइप द फाइल नेम ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू ओपन इन द फाइल नेम बॉक्स इन द डाउन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स के जो नीचे आपको डिस्प्ले हो रहा है फाइल नेम, यहाँ से आप अपने टाइप करके भी इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, now we are going to discuss about the fourth topic,
How to insert second document into the current document. To insert another file into the currently opened file, the following steps are: number 1, open the document file in which you want to insert other existing file. ਅਸੀਂ अपना document पहले open करांगे जिससे ਅਸੀਂ second file ਨੂੰ insert कर सकते हैं. If you want to insert the file to the bottom of document, then move the cursor to the bottom of document by pressing the Ctrl plus N key combination from the keyboard. If you want to insert the second file in between the currently open file, then move the pointer at the location where you want to insert and clicking the mouse button. ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਇੰਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਇੰਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾਓ ਸਿਲੈਕਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਮਾਂਡ ਫਰੋਮ the insert menu. When you click it, an insert dialog box will be displayed. Yes, from this dialog box you can select the required file which you want to insert. मीनस कि ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਾਈਲ ਨੇਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਫਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਨੇਮ ਦੈਨ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਓਕੇ ਬਟਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਟਾਈਪ ਕਰਤਾ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਈਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਫਾਈਲ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ Fifth topic we will discuss how to close the document and how to exit from the MS Word. Both are the different things. Okay. First we will discuss close and document. Once you have finished your document, you can close it. To close the current document file, first of all open the file menu. Now select the close option from the file menu. The document will be automatically closed. ठीक है ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ if you are trying to close a document then you have not saved ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ then this dialog box will be displayed ਠੀਕ ਹੈ in this dialog box there are three option yes no and cancel ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ then yes ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ then no ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ then you have to be click on the cancel this dialog box have three button ठीक है three buttons ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ purpose ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਟਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3.9 topic is exiting from MS Word. If you want to close MS Word program then you can select the exit command from the file menu. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MS Word ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ then we will use the option exit. Also you can press control you can also press alt plus F4 key combination from the keyboard as a shortcut key to close the MS Word and move to the desktop that is exiting the MS Word. If you will try to exit from MS Word without first saving the latest modification MS Word display the dialog box same वही dialog box again display कराएगा जे in case ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ डाटा save नहीं ਕੀਤਾ ठीक है get when you try to close a file without saving it first of all save document then quit from the MS Word by using the exit command both are the different things ठीक है जे ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ डाटा close करना है then ਅਸੀਂ close button यूज करांगे जे सारे डॉक्यूमेंट्स ਨੂੰ at the same time close करना है then we will use the concept of exit